सो देखो PYQ टा एटा हला PYQ क्वेश्चन टा तमर क्वेश्चन एक्चुअली एमती देइथिला देखो देखे दउची मु क्वेश्चन कहितला सो दैट द फंक्शन e to the power x into cos y plus I sin y is analytic and find its derivative देखो क्वेश्चन तार पैटर्न टा एटा सेति पे मु लॉग जेड रो एनालिटिसिटी चेक करो आ तार डेरिवेटिव टा बाहर करो बोली क्वेश्चन देली एटा 8 मार्क रो लॉन्ग क्वेश्चन ठीक अछि तो देखो मु पार्ट पार्ट करी करूची प्रथमे एनालिटिक गोटे क्वेश्चन देखिबी आ गोटे डेरिवेटिव आ गोटे क्वेश्चन रे बाहर कर देबी ठीक अछि देखो क्वेश्चन टा question hella check the analyticity of the function f of z equal to e to the power x into cos y plus I sin y. The necessary and sufficient condition for analyticity of a complex function f of z equal to u of iv is that CR equation must satisfied. ठीक अछि CR equation must satisfied कौन सेटा ux plus ux equal to vy and uy equal to minus vx and आउ भी लिखि पारिबो and all its necessary and sufficient condition लिखिछि all its partial derivative all the partial derivative ux uy vx vy are continuous एटा भी ऐड कर दबो ठीक अछि कंटीन्यूअस तो एटा हला तमरो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी सो मु कोन कहली लेट f of z इक्वल टू e to the power x into cos y plus I sin y लिखिली तो मो काम होउजी u plus iv फॉर्म रे कन्वर्ट करिवि ताहेले मु पार्शियल डेरिवेटिव बाहर करि पारिबि सो मु कोन कहली x टा मल्टीप्लाई कला को e to the power x into cos y plus I into e to the power x sin y आसिला ठीक अछि तापर u इक्वल टू कोन पाइलो e to the power x cos y एठु मिलला आ v इक्वल टू e to the power x sin y सो देखो एठु कोन पाइलो तमे ux इक्वल टू तमर कोन हबो del u by del x हबो तो del by del x of e to the power x cos y हला एठी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x अछि माने y टा कांस्टेंट हबो माने ए वैल्यू टा तमर कांस्टेंट अछि सो cos y टा कांस्टेंट नेली आ e to the power x रो डेरिवेटिव टा हुए e to the power x ता माने ये नु जे भितरे अछि बोली हेटा देखो एटा एंती लिखि दउची which is equal to e to the power एंती लिखुची हला काई ना तम माने भूल भाल करूछ सो e to the power x into cos y तापर y uy टा केते आसला del u by del y equal to del by del y of e to the power x cos y तो एठी तमर कोन विथ रेस्पेक्ट टू y करूछ माने e to the power x टा कांस्टेंट तो e to the power x को बाहर को नेली आ डेरिवेटिव बाहर करू जे cos y तो cos y रो डेरिवेटिव केते हुए माइनस sin y हुए लिखली एठी माइनस sin y तो which is equal to minus e to the power x into sin y हला अगेन देखो v of x बाहर करूची del v by del x equal to del by del x of e to the power x sin y so here with respect to x करा जाउची ता माने तमरो y टा एटा केते एटा हला तमरो कांस्टेंट हबो ठीक अछि सो कोन पाइलो तमे sin y को कांस्टेंट लिखिलो e to the power x रो डेरिवेटिव e to the power x आसिला सिमिलरली v y टा केते आसीबो del v by del y del by del y of e to the power x sin y here e to the power x is constant मो constant को लिखि नेली sin y रो डेरिवेटिव होय तमरो cos y ठीक अछि तापरे from the above it is clear that देखो from the above देखो एठु मु कोन पाइली ux equal to vy होउची कि देखो ux टा देखो एटा आ vy टा देखो एटा देखो e to the power x cos y e to the power x cos y ता माने मु कोन पाइली e to the माने ux equal to vy पाइली नेक्स्ट देखो uy हला तमरो माइनस e to the power x sin y अछि vx हला e to the power x sin y अछि ता माने कोन माइनस ऑफ गोटे टर्म अछि ता माने uy equal to minus vx लिखि देली ठीक अछि सो इट इज एनालिटिक पाई गलो since exponential function and since product of exponential function and trigonometric function is continuous so ux uy vx vy are continuous ता माने तमर सफिशिएंट कंडीशन भी तमर होल्ड कर देला ता माने लिखि परिबो सो एटा परे लिखिबो हला सो the given function is analytic ठीक अछि तापर नेक्स्ट देखो फाइंड द डेरिवेटिव
of e to the power x into cos y plus I sin y ହେଲା ତା next part ଟା ମୁଁ another question type ର ଲେଖିଛି ଏଟା next part ଟା ଏଟା so ଏଠି ଦେଖ f dash z ଟା କଣ ଆସିବ ତମର f dash z ଆସିବ ତମର ଯେହେତୁ ମୁଁ f of z equal to ଯଦି u plus iv ନେବି ଯଦି ମୁଁ ଡେରିଭେଟିଭ କଲି with respect to x କଲି ଠିକ ଅଛି f of z କଲି ତା ମାନେ ଏଟା କେତେ ହେବ del u by del x ବି ହେବ ଏଟା ହେବ ତମର del v by del x ଆସିବ ତା ମାନେ ux plus I vx ହେବ so ମୁଁ ux ଜାଗାରେ value put କରିଦେଲି e to the power x cos y ଆଉ ତମର del v by del x ଜାଗାରେ e to the power x sin y ଟା put କରିଦେଲି ହେଲା or ତମେ another formula apply କରିପାର ତମର vy minus I uy ରେ ଠିକ ଅଛି so ଏଟା apply କଲେ କେତେ ଆସୁଛି vy ର value put କଲ e to the power x cos y minus of I into minus e to the power x sin y which is equal to e to the power x cos y plus I into e to the power x sin y जहाँ कोले भी सेम डेरिवेटिव रे वैल्यू टा आसीबो देखो तमे आइदर विथ रेस्पेक्ट टू x करी की भी तमे f डैश z रो वैल्यू बाहर करी पारो और विथ रेस्पेक्ट टू y करी भी बाहर करी पारो सेम वैल्यू ही आउची एति की तमरो 8 मार्क देखो केते इजी क्वेश्चन देखो ए दीटा मिसेले तमरो 8 मार्क आउची देखो एति की ओनली तमरो 8 मार्क होची सो एनालिटिसिटी रे कंटिन्यूटी वाला भूलिबनी हला पार्शियल डेरिवेटिव गुडा को तमरो कंटीन्यूअस बोली लिखि दबो गोटे लाइन ता पिला माने आमे ए 5 नंबर क्वेश्चन ता सॉल्व करले एबे सो देखो एबे आउट क्वेश्चन रे करबा क्वेश्चन होची तमरो लेट f of z be an analytic function defined in a domain D then f of z is constant if mod f of z is constant in D देखो एडा मु आउ गुटे टाइप रो लिखि तमरो एग्जाम रे पढितला एक्चुअली ए क्वेश्चन ता so that an analytic function with constant modulo is constant so that an analytic function with constant modulo is constant ता माने तुमको देखेबार अछि जे तमरो जदी गिवन अछि f of z गोटे एनालिटिक फंक्शन टा f of z तमरो एनालिटिक अछि आउ f of z रो मोड टा तमरो कांस्टेंट होउची ताहले मु देखैबी जे f of z टा तमरो कोन आसीबो कांस्टेंट बोली शो करबी बुझि पारलो क्वेश्चन कहला so that an analytic function with constant modulo is constant माने गिवन अछि f of z is analytic f of z mod टा कांस्टेंट तुमको देखेबार अछि f of z is constant that means कोन जदी मु f of z को u plus iv रे लिखिबी ता माने एटा कांस्टेंट मींस कोन आसीबो uv टा कांस्टेंट हेले त तमरो f of z टा कांस्टेंट आसीबो ता माने मु एटा देखेबी uv टा कांस्टेंट बोली शो करबी हला तो देखो गिवन f of z गिवन mod f of z equal to constant where f of z equal to u plus iv which is implies that mod f of z square equal to mod of u plus iv रो square which is equal to mod केते हुए तमरो root over of u square plus v square हुए तो तारो square आसिला ठीक अछि which is equal to u square plus v square equal to तमरो constant so implies that कोन पाइलो u square plus v square equal to constant पाइलो मु देखेबी एठी जे u v टा constant बोली ए कंडीशन को नै कि मु शो करबी u आउ v टा तमरो constant बोली हला so मु कोन कली प्रथमे डिफरेंशिएट पार्शियली with respect to x कली तापर differentiating with respect to y भी करबी हला तो देखो del by del x of u square plus v square ता बाहर कला कोन आसला del by del x of constant function हुए implies that एटा तमर कोन u टा function of x y रे थाए तो मु लिखि परबी यार डेरिवेटिव टा को 2u with respect to x कले 2u into del u by del x plus 2v into del v by del x equal to 0 so which is equal to 2u into ux लिखली del u by del x जगह रे plus 2v into vx लिखली del v by del x जगह रे which is implies that u into ux plus v into vx equal to 0 आसिला एटा को मु इक्वेशन 1 देली similarly differentiating partially with respect to y कला को मु पाइली del by del y of u square plus y v square equal to del by del y of u square plus v square equal to del by del y of constant function so 2u into eta kon asibo tomoro del u by del y plus 2v into del v by del y equal to 0 implies that u into uy plus v into vy equal to 0 hala so given that f of z is analytic function implies that f of z satisfy tomoro kon given achi tomoro analytic function means satisfy CR equation habo तो मु लिखिली CR इक्वेशन लिखिली ux equal to vy vx equal to minus uy हबो जेहेतु तमरो f of z is
एनालिटिक फंक्शन बोली गिवन अछि सो मु ए दुईटा वैल्यू को मु इक्वेशन 1 एंड 2 रे अप्लाई करिवि सो यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कोन पाइबा हमें u into ux plus v into vx equal to 0 अछि सो मु u into ex plus मु ओनली vx जगह रे लिखि परिबि जेहेतु तमरो uy इक्वल टू माइनस vx हुए और एटा को तमे माइनस uy इक्वल टू vx लिखि पारो सो vx जगह रे माइनस uy टा मु लिखि देले ठीक अछि सो कोन आसिला एटा तमरो u into ux minus v into uy equal to 0 आसिला एटा को इक्वेशन 3 ना देली सिमिलरली मु सेकेंड इक्वेशन रे भी तमरो पुट करूची vx जगह रे uy vy जगह रे देखो ux टा सो u into uy plus v into vy अछि जेहेतु तमरो ux equal to vy हुए मु लेखिली u into uy plus v into vy जगह रे मु लेखिली ux टा हैला सीआर इक्वेशन अप्लाई करिची ठीक अछि सो इक्वेशन 3 आउ 4 को मु एमिति हिसाब रे सेटिंग करिवि और सॉल्व करिवि जे मु पाइबि ux equal to 0 आउ तमरो uy equal to 0 ताहले कोन आसीबो जदि ux equal to 0 देखे देले दैट मींस कोन गोटे कांस्टेंट फंक्शन रो डेरिवेटिव में 0 आसे दैट मींस तमरो u टा इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y हैला माने कोन कांस्टेंट फंक्शन हबो आउ एटा भी तमरो एई जगह रो भी तमे सेही वैल्यूटा पाइबो सिमिलरली मु vx vy पई भी देखै परिबि सेम जिंस सो मु कोन कली ए इक्वेशन ऑफ 3 आउ 4 रे मते ux इक्वल टू 0 दरकार सो एठी ux वाला टर्म अछि हैला एठी ux वाला टर्म अछि सो मु देखो कोन करबि जे ux इक्वल टू 0 आसीबो देखो मु एठी भी ux वाला टर्म अछि देखो सो एटा u अछि एठी v अछि ता माने मु ऊपर जदी v टे मल्टीप्लाई करबी ए तळे जदी मु u टे मल्टीप्लाई कर देली किछ गोट सेटिंग हे पारिबो सो मु कोन करली इक्वेशन 3 u कली आ इक्वेशन 4 v कली तो कोन पाइली u स्क्वायर ux माइनस u v uy इक्वल टू 0 आ एटा पाइलो तमे u v uy माने ऊपर u तळे v करजो तो u v uy plus v square ux इक्वल टू 0 implies that कोन पाइलो u स्क्वायर देखो एटा कैंसिल हे गला एटे पाइलो u स्क्वायर ux plus v square ux equal to 0 so ux ता कॉमन नला को u स्क्वायर plus v square equal to 0 आसिला गिवन अछि तमरो गिवन u स्क्वायर plus v square equal to मु कोन पाइली कांस्टेंट बोली पाइची मु गिवन जहा दिला से टू डाटा रो सो मु कोन पाइली कांस्टेंट तो नॉट इक्वल टू 0 होबो सो ux equal to 0 सिमिलरली एलिमिनेटिंग ux वी गेट कोन पाइबा u स्क्वायर plus v square uy equal to 0 पाइबा कि नहीं और तुमको कहि दउची देखो सिमिलरली मु कोन करबी मते एई वैल्यूटा दरकार कोन एई टर्म को रखी बाकी टर्म को मु 0 करबी हला एई टर्म को रखी बाकी को 0 त माने एठी भी मु अगेन मु u v टा मल्टी इक्वेशन 3 रे u टा मल्टीप्लाई करबी इक्वेशन 4 रे v टा मल्टीप्लाई करबी ठीक अछि तापरे मु जदी माइनस कर देबी तो ऑब्वियसली हे जिवो एटा तमर एटा पाई जिवो सो u स्क्वायर plus v स्क्वायर into uy equal to 0 uy equal to 0 आसिला हला thus u is independent of x as well as y that is तमे कोन पाइलो u is constant पाइलो ठीक अछि एठो ux equal to 0 means x is independent of x पाइलो uy equal to 0 means u is independent of y पाइलो ठीक अछि त माने कोन that is u is constant function similarly we can show that v is constant भी देखे परिबा हमें therefore f of z equal to u plus iv is constant function प्रूफ ता इजी अछि खत्म को बुलेबा पई से डिफरेंट लैंग्वेज रे दे देजी ठीक अछि हला प्रूफ ता हे गला एटा सो देखो सेम टाइप रो ही क्वेश्चन किछि अछि तमे माने मु जो पीडीएफ टा पठै छी से पीडीएफ रे सॉल्यूशन देखि की प्रैक्टिस करिवो हला let f of z be an analytic function defined in a domain D then f of z is constant if f of z is real valued for all z belongs to D माने एटा हे पारे और एटा हेले f of z रो conjugate is analytic हे पारे एटा देखिथिबो एटा ठीक है ए तीनटा देखिथिबो b c d ठीक देखिथिबो ठीक अछि so तापरे कोन रियल पार्ट ऑफ f of z is constant in D आसीबो इमेजिनरी पार्ट ऑफ f of z is constant in D आसीबो ठीक अछि आ आर्गुमेंट ऑफ z is constant in D आसीबो जदि ए कंडीशन हला आ f dash z equal to 0 आसीबो in D आसीबो हला सो यार प्रूफ ऑलरेडी पीडीएफ रे अछि त माने देखि नबो बुक रो पीडीएफ जो पठाई छी आ जोंटा बुझी पारिबोनी मते पचारिबो ठीक अछि।